ईट ट्रैवल फन। दिस इज योर होस्ट मानसी ओझा। आज का वीडियो फोटोग्राफी पे है और आज हम करेंगे बोका फोटोग्राफी। सो बोका इफेक्ट इज बेसिकली जब भी बैकग्राउंड ब्लर होता है वो इफेक्ट को बोका कहते हैं। नाउ टू थिंग्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट फॉर सच फोटोग्राफी इज वन, you need to have a distance between the subject and the light. So if you are using a light, do maintain a distance between your background and the subject. And the second important thing is that if you're using a DSLR camera, ensure that your aperture at around 2.8 to 3.5 f-stop, because you need to have a blur background. You need to have your background out of focus to create the bokeh effect. So आइए देखते हैं कैसे different types की bokeh photography हम कर सकते हैं। फर्स्ट टेक्निक, मैंने मेरी दिवाली लाइट्स पीछे लगाई है बट यू कैन सी फोकस मेरे पे है और बैकग्राउंड पूरा ब्लर है। नाउ आई विल यूज दिस टेक्निक टू क्रिएट इंटरेस्टिंग पिक्चर्स वेयर आई विल बी पोजिंग एंड आई विल टेक अ जेनरिक पिक्चर। पहला तरीका नॉर्मल बोका पिक्चर्स लेना था। दूसरा है अभी कार्डबोर्ड पे शेप कट करके उसको आप लेंस के आगे लगा सकते हो और उसके थ्रू जो आपका बोका इफेक्ट है वो शेप में आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टार ट्राई किया है, मैंने क्रिसमस ट्री ट्राई किया है। ऑल यू हैव टू डू इज दैट कट अ शेप ऑन अ कार्डबोर्ड पेपर एंड पुट इट इन फ्रंट ऑफ योर लेंस। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कार्डबोर्ड पे कट कर रहे हो, ensure that it's black paper and it's not any other paper and it's a little thick paper because lens के आगे कोई भी चीज लगाओगे so there is a possibility of light coming into the lens. Light की वजह से आपका वो इफेक्ट प्योर नहीं आएगा unless and until that is black in color. तीसरा तरीका है कि यही लाइट जैसे मैंने रैंडमली अरेंज की है, इसको आप कोई शेप में अरेंज करो। जैसे ही आप शेप में अरेंज करोगे आप वो शेप के साथ प्ले अराउंड कर सकते हो। आई एम यूजिंग डिफरेंट शेप्स टू क्रिएट द बोका लाइट बिहाइंड मी, बट आई एम इनैक्टिंग इन सच अ वे कि वो बोका लाइट मेरे पिक्चर्स को एनहांस कर रही है या फिर कुछ इफेक्ट दे रही है। यू कैन जस्ट प्ले अराउंड विद द शेप एंड यू कैन क्रिएट इंटरेस्टिंग पिक्चर्स। That was our video for bokeh photography techniques. If you like it, give me a thumbs up. Let me know in the comment section have you liked the video, and if you're looking at more photography series, do check out my video on monsoon photography and also photography using different objects. Before you leave, please subscribe for your weekly dose of Eat Travel Fun.